let's take another example. अभी तक so far we have solved problem that has a unique solution. Unique solution means we have only one solution, and that is, in other word, we say that the iso profit line or iso cost line, it is parallel to only one point, only at a point in the feasible region. But look at this problem, where we have to maximize this function. It is subjected to some three constraints. So let us plot these constraints. So let first mention these variables. So let this is your x1 and this is your x2. First constraint, let us convert into quality. So it becomes x1 plus x2 equal to 10. So first becomes x1 plus x2 equal to 10. That means intercept on axis, each axis 10 and 10. So this 10, 5, 6, 7, 8. This is the 0, 10. This is 0 and 10, and this is your 10, 0. 10, 0. So this will be our first constraint. Draw this constraint, and the nature of the constraint, it is less than equal to type. That means the feasible region will be towards the origin. Feasible region will be your towards the region. So इस लाइन के अंदर की साइड में जो भी है on this particular side, so that will be our region. And this particular constraint, it is your x1 plus x2 less than equal to 10. This is the constraint first. Second constraint, x2 less than equal to 15. So x2 on y-axis 15. So this is the point 15. So draw a parallel line to x1. So we have drawn this line, parallel line. And this particular constraint, it is x2 and less than. That means the region किधर होगा? Below the line. So this side your will be feasible region. This is your less than. So this is your second constraint, x2 less than equal to 50. Let us plot third. It is your 3x1 plus 6x2. So 3x1 plus 6x2 equal to 18. So if x equal to 0, so if x1 equal to 0, so we get x2 is equal to 3. This becomes 0. 6x2 is equal to 18. So x2 will be 18 by 3. So 18 by 3, that means it is 6. It is 6. And suppose x2 is equal to 0. This term is 0. So 3x1 is equal to 18. So we get x1 is equal to 6. So the first pair of point x1 0, x2 6, here 6 and 0. So let us plot third constraint. So this is 6. This point will be your 0 and 6, and this will be your 6 and 0, and this will be your constraint. This will be your constraint 3. And the nature of the constraint, again less than equal to, that means whatever the inside the below the line, that will be your feasible region. Now satisfying these three constraints, फर्स्ट लाइन के नीचे देखें तो ये पूरा रीजन आंसर में आना चाहिए, बट इट डज नॉट सेटिस्फाई कंस्ट्रेंट 3. कंस्ट्रेंट 3 बोलता है इसके भी नीचे होना चाहिए. दिस इज कंस्ट्रेंट 3, दिस इज योर कंस्ट्रेंट 1 एंड दिस इज योर कंस्ट्रेंट 2. सो योर बाउंडेड फिजिबल रीजन, सो दिस विल बी योर फिजिबल रीजन. जो कंस्ट्रेंट 1 के 3 के भी नीचे है, 1 के भी नीचे है और 2 के भी नीचे है. सो दिस पर्टिकुलर रीजन विल बी योर feasible region. Now let us
find the optimal solution. So for that we have to perform the optimality test. That means one point corner point यहाँ पे है, another corner point यहाँ पे है. That means let us find the value of z. This point is A and this point is B. So let us find one by one. So what will be your ZA? तो ZA और ZA के लिए x1 is equal to 0 and x2 is equal to 6. So substitute here 4 into 0. This 4 into 0 plus 8 into 6. So we get Z is equal to 48. Place this one ZB. So for ZB, x1 equal to 6 and x2 is equal to 0. So ZB will be 4 into 6 and plus 8 into 0. So it comes out 24. I think I have made some mistake. बराबर है सब. This is here. Okay, if x2 is 0, again okay. Here, x1 is equal to 0, so we get x2 is equal to 3. Oh, mistake, sorry. This will be your 3. This will be your 0, 3. 0, 3. So this will be your 0, 3. This will be your 0, 3. So we get 8 3s are 24. Sorry, So ZA, it gives 24. ZB also gives 24. That means we have a 2 points where we are getting same value of Z. A पे भी सेम वैल्यू निकल के आया 24, B पे भी सेम वैल्यू निकल के आया 24. सो दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम हैज़ ए मल्टीपल सोल्यूशन. ऐसा क्यों हो रहा है? इट इज़ बिकॉज दिस पर्टिकुलर लाइन, this if you plot, this is your isoprofit line. यहाँ पे क्या है कि कोई लोवेस्ट पॉइंट नहीं है, हमको लोवेस्ट एक लाइन ही मिल गया. ये लाइन पूरा लाइन ही आ गया. सो अगर इसको प्लॉट करेंगे, इससे पहले वाले जो भी प्रॉब्लम हमने किए, सपोज अगर मैं दिखाऊं, इससे पहले वाले प्रॉब्लम में हमने क्या किया था. हाँ, लेट अस लुक दिस वन. सो जो हमने इस आइसो प्रॉफिट लाइन पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया था, तो वो टेंजेंट किस पे आ रहा था? एक पॉइंट पे आ रहा था. इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको एक कॉर्नर मिल रहा था. दैट कॉर्नर वाज आवर ऑप्टिमल सोल्यूशन. बट यहाँ पे ऐसा कोई कॉर्नर नहीं आ रहा है. चेक कर लेते हैं उसको. सपोज अगर इसको प्लॉट करें 4x1, इट इज़ 4x1 प्लस 8x2. सो अगर इसको 12 ले लें, सपोज 4x1 प्लस 8x2, z की वैल्यू नहीं पता है हमको, तो z की वैल्यू हम ले लेते हैं 32 ले लेते. चलो 32. सो अगर x1 0 है, सो x1 0 हो गया तो x2 विल बी 4. एंड सपोज इफ x2 0 हो गया, सो x2 0 हो गया, सो दिस टर्म विल बी बराबर है. ये टर्म 0 हो गया, सो x1 विल बी 8. So x1 will be 8. So if I plot this point 0 and 4, 8 and 0, so देखो कहाँ पे आएगा? 0 and 4. So 0 and 4 यहाँ पे आएगा. This will be 0 and 4. बराबर ड्रॉ किया x1. So this is 0 and this becomes 32 divided by 8, 4. Okay. x2 0 किया, so this is x2 0, x1 8. So 0 and 4. So this is your 0 and 4. And another is 8 and 0. So 5
This is your 6, 7, 8. 8, 0. So if I draw, I think बराबर है सब कुछ 4x1 प्लस 8x2 32x1 ज़ीरो कर दिया, ये टर्म ज़ीरो हो गया तो 4. ओके, इसको ज़ीरो किया, x2 ज़ीरो कर दिया, so this is your x1 is 8. So x1 8 comma 0 0 comma 4. Okay, there is some problem. So no problem, you can solve by the corner method. कि you these are the two different points. फिजिबल रीजन किधर आया हमारा? फिजिबल रीजन इसके नीचे की साइड पे ये हैश किया हुआ है, सो दिस इज द फिजिबल रीजन. सो इसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन है? ए, बी एंड दिस ओरिजिन. सो यू फाइंड दिस, ऑलरेडी वी हैव calculate 0 6, this is 6 0 and substituted in the value of z, so we get the same value of z. So we are getting same value at two different points. So that means whatever the point lying, जितने भी पॉइंट हैं इस लाइन के ऊपर, all are giving the same value of z.